अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद संजरानी ऑफिशियल। और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एविएशन में जो है, एविएशन सेफ्टी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वक्त ज़ाहिद है जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए बहुत अहम है। और ये जो क्या कहते हैं, रिसेंटली जो है 1-2 दिन पहले एक एविएशन की तमाम मुख्तलिफ जो माहिरीन जो है एक जगह पर जमा होते, वो जगह थी ASSL जो है, वो एक एविएशन कंपनी है। अकबर जाफ़र उसके CEO हैं। और जो कंडक्ट किया कैप्टन मोहसिन ख़ान, वन ऑफ द बेस्ट पायलट, और एविएशन सेफ्टी पे उनका बड़ा जो है नाम है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल भी, क्योंकि वो सासी के वाइस प्रेसिडेंट भी है और साथ साथ इधर ASSL में भी काम करते हैं। एंड अकबर जाफ़र ने उनको एक रोल दिया हुआ है कि आपने एविएशन सेफ्टी और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल जो है उस पर काम करना है। बहरहाल ये जो मैनेजिंग ऑपरेशनल सेफ्टी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक लेक्चर हुआ, जिसमें जो आला नाम जो है वहाँ पे हमें नज़र आया। मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था, उसको कवर भी किया। बहरहाल तो ये ऑपरेशनल सेफ्टी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी अहम है, तो इस पर जो है पूरा जो है एक लेक्चर हुआ। उसमें बड़ा नाम था जो है, जो विंग कमांडर नसीम अहमद साहब थे, प्रेसिडेंट एसासी के, वो थे। इसके साथ साथ जो कैप्टन जोनी सादिक, वन ऑफ द ग्रेट गाय ऑफ PIA ऑफ इट्स टाइम, सो उन्होंने भी लेक्चर दिया। और क्या क्या हुआ और हम आपको दिखाते हैं। And we are the launch customer for going for long range. And he showed the picture of Boeing 777 Alpha Papa Bravo Hotel X-ray, which went into a dry hail, and look at what happened to that nose and the whole structure, the whole aircraft, the new brand 777 from Milan to Paris. PIA pilots were flying that, and he showed me. My GM, Captain Salman Azhar, quite a person, quite a name, strict guy. Everybody knows about him. I was his deputy. He said, "Mohsen, what is this?" And I would really request my august audience and young boys like Naveed and many is there. So please ask as many questions. You can interrupt between these presentation also. This also, everything is a man-made rules and laws. So we can shift the paradigms. So that's what's the beauty. And the wreckage was being taken on a trailer from one place, and we were talking to the Chinese that, look, just tell us what happened. He said, no, there's no crash. I said to my secretary, look, a wreckage is there. I recognize the wreckage. He said, it's not wreckage, it's not wreckage. So when this problem exists in Pakistan, especially with our civil story, that you are not sharing any data, you are not admitting any incidents, you are not admitting, you are not saying problem is big. I think it's correctly that PF, Navy, Army will never share their data with anyone. So how these systems will work? So this is the limitation. The rest, there is no denial of the power of the AI. Okay, Mohsen? Yes, sir. So kind, so kind. The new beginning of digital era of the ASSL, and it will be a very good and effective system, I believe, because as per for now we are using manual reporting system like paperwork and something like that. So, and for my age and like for our new generation system, so we believe that that was an old school system. And we are moving towards artificial intelligence and new era of digital system, which will be very effective for our company also. Sometimes with 2 engines out on one side on the real aircraft. Considered very dangerous today, but anyway, so I just wanted to give you an example of what we did when I was chief on DC-10. And that was, there was a terrible accident with Turkish Airlines at Orly Airport. Everybody was killed on board that DC-10. It took off, the rear door blew out, the cargo door, and it pulled the floor down, which severed the control wires. And everybody was killed. Now, when the final result came out of that investigation, I did a little research myself. I found out that the control wires for the
manual control went through the floor, and they were separate. But the control wires for the autopilot went through the top of the aircraft, the roof, which meant if the captain had been able, and it's not his fault, but most people wouldn't have done this, if he'd have put the autopilot on, he could have come in and made an auto landing, and nobody would have died. So what did we do? We did our training in those days and our checks in Tokyo. 6 months in advance, listen. This one's up for an appraisal and promotion. This is the budget for it. We don't have it. This one's up for being fired. These are 5 or 6 new CVs that will be ready for you. So that's taking it to the next step. But the one we right now is generated for Captain Mohsin, and I am hoping with the if we have enough data points and data sets, but we have our problems with that too, that it can then predict. So it's as much data as you can feed it, then it can make a sound decision. So that's the next step. जी, तो आपने देखा ओवरऑल इवेंट कितना ज़बरदस्त इवेंट था। बहरहाल आप जो है एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स जो है वक्त की जो है सबसे पावरफुल टूल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप जो है मुख्तलिफ अपने प्लान्स बनाते हैं। साथ साथ जो आजकल एयरलाइंस में इवन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एयरलाइंस में ओवरऑल तमाम सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका बड़ा किरदार है। इसकी जो कितनी अहमियत है आप जब फ़्लाइट प्लानिंग कर रहे होते हैं, या फिर आप इवन जो अपना ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए कितना है, एविएशन सेफ्टी के लिए कितना अहम है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कितना है उसका अहम रोल है, एविएशन के फ़रोग के लिए क्या अहम है। इवन तमाम एयरलाइंस आजकल अपनी जो है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, अपने फ़्लाइट प्लान्स को, साथ साथ जो बिज़नेस प्लान किस तरह बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल है, वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। और आपने देखा कैप्टन जोनी सादिक का लेक्चर देखा, कैप्टन मोहसिन खान ने ज़ाहिर इनपुट दिया, फिर वहाँ पे जो इंटर्न्स थी उन्होंने भी अपने इनपुट से, दैट्स रियली गुड। और बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आया कि इंटर्न्स जो है एसएसएल में आ रही हैं, और वहाँ पर जो असिस्टेंट के तौर पर कैप्टन मोहसिन के साथ जो है मुंसलिक भी हैं, काम सीख रहे हैं। मतलब भाई जो न्यू जो ब्लड है या न्यू ब्रांड्स है वो वाकई बहुत टैलेंट है, और इंशाल्लाह यही मुल्क को इनको आगे लेकर जाना है। बहरहाल आई होप यू हैव एंजॉय कि कैप्टन जोनी सादिक ने अपनी टाइम में भाई फ़्लाइट प्लानिंग ये सारा बताया, किस तरह वो मतलब जहाज़ उड़ाते हैं, अपने एक ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंस। और फिर मज़ीद जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस जो है शेयर किए। और आई होप you would have liked this episode and show on my YouTube channel. Keep watching Irshad Sanjani Official. Pakistan Zindabad, ASL Zindabad, Pakistan की Aviation Zindabad, Pakistan Paindabad. Keep watching Irshad Sanjani Official.